Dear students, now we are going to discuss about the important lesson, the lesson number 2, the last spin. In this important lesson, the narrator Nijum describes about 2 episodes during her journey. The first one was to Shimapuri, where she witnessed the rape pickers in the Simapur. One was Firozabad, where she watched the condition of the bangle makers. Here in Simapuri, people. It's a very good morning to all of you on this important festival of Holi, and और सभी बच्चे जो है पूरी तरीके से उसको लिख रहे थे और इतने तल्लीन थे कि उन्हें किसी भी कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता था। तभी यम हैमिल ने ये घोषणा कर दी कि ये उनका अंतिम पाठ है। जैसा कि बर्लिन से आदेश आया है कि अगले दिन से फ्रांसीसी भाषा के बजाय यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और एक नए टीचर यहाँ पर आकर के अध्यापन का कार्य करेंगे। जैसे ही वो विद्यार्थी इस शब्द को सुनता है, उसके अंदर बिजली दौड़ जाती है और यम हैमिल के वो शब्द याद आने लगते हैं। जब यम हैमिल ने उससे कहा, कहो, आप तो कहते थे कि अभी पढ़ाई के लिए बहुत समय है, लेकिन देखो अब आप कहाँ आ पहुंचे। और मैंने बार बार आपको पढ़ाई के लिए कहा था, लेकिन आपके माता पिता ये चाहते थे कि आपको पढ़ाई के बजाय किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम पर लगा दिया जाए ताकि आप कुछ पैसे कमा सको। और दोष मेरा भी है, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता था तो मैं आपको छुट्टियां दे देता था या फूलों या पौधों को पानी देने के लिए कह देता था, तो इसलिए हम सब दोषी हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज हम ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अब हमें विद्यालय छोड़कर जाना होगा। और मेरे लिए दुख की बात है कि जो अल्सास के लोग हैं वे सही से फ्रांसीसी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना भी नहीं जानते हैं। वो फ्रांसीसी जो विद्यार्थी है वो बहुत दुखी हुआ कि जब उसने पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया और वो सारी किताबें जो उसे बोझ लग रही थी अब उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गई थी और अब उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। और यम हैमिल का ये निर्णय कि अब वो अगले दिन से क्लास नहीं लेंगे, ये उसके लिए अब बहुत बड़े दुख की बात थी। सभी लोग क्लास में पूरी तरीके से दुखी थे, निराश थे और लोगों की आंखों में आंसू थे। वैसा भी यम हैमिल को उस दिन विदाई देने के लिए बैठे हुए थे, जो उनकी 40 साल की वफादारी पूर्ण सेवा थी। इतनी बातें हो रही थी, उसके बाद में जो है सभी लोग दुखी हुए। तभी चर्च की घंटी में 12 बजे और उस घंटी का संकेत हुआ और हैमिल ने भी दुखी मन से इशारा कर दिया। सबसे पहले तो और बोर्ड पर जितना अधिक उनसे हो सका फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांसीसी भाषा अमर रहे, इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने ये संकेत कर दिया कि विद्यालय का अध्यापन कार्य समाप्त हुआ और वे सब जा सकते हैं। फ्रांसीसी विद्यार्थी को हमेशा इस चीज का मलाल रहा कि काश वो पहले पढ़ लेता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया जहां पर अब उसे गुलामी के अंतर्गत रहना पड़ेगा और अपनी भाषा से भी अपने आप को धोना पड़ेगा। तो जिस आपको पता ही है पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम सीख। अब ये जो अंतिम सीख नामक पाठ है, इसका मतलब यही है कि अगर हम शिक्षा से संबंधित चीज में देरी करेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि शिक्षा वो माध्यम है, किसी भी भाषा वो अपने आप में उस देश के लिए वो माध्यम है
जो अब संप्रेषण का एक दूसरे से संचार करने का एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं और एक नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचाए रख सकते हैं। ये भाषा ही है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और उन्हें इकट्ठा करती है। तो ये जो लेसन है वो पूरी तरीके से इस चीज को बताता है कि भाषा या शिक्षा कितनी जरूरी है। अगर हम शिक्षा से दूर हो गए तो स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। शिक्षा नितांत आवश्यक है किसी भी चीज को समझने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, और उसमें भाषा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। तो ये जो पाठ है इस प्रकार से सीख देता है कि हमें सर्वप्रथम शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और भाषा का पूर्णपेण विकास करना चाहिए। तो ये इस पाठ की संधि थी जो आपको हिंदी में बताया गया। अब इसको इंग्लिश में डिक्टेट किया जाएगा। द लास्ट लेसन इज a very important one by Alfonso Daudet, where he describes about the two districts in France, Alsace and Lorraine, where these two districts are seized by the Prussia ruler Bismarck, and in his leadership there was an order from Berlin for all those districts, especially for the schools, that the French language will not be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Rather, the Berlin language will be taught. M. Hamel has to depart the next day, and the new teacher will join the school next day. So this was the day of the last lesson, and a French student reached the classroom where Yam Hamel was already started, already on his way to teach. Yam Hamel was dressed beautifully in green coat with fit shirt and a white black silk cap all embroidered. He was very serious and solemn. The class was completely silent, and Yam Hamel was telling them the importance of the mother language. All the old men from the village were sitting on the back benches of the classroom to thank Yam Hamel for his 40 years faithful service as a teacher. The French reached late, but he was asked by Yam Hamel to sit properly at their seat. Those days, Yam Hamel brought notebooks for writing dictation, and there were the round letters written France Alsace on them. Yam Hamel blamed the French for not learning their own language and also his parents to in the engage him in factory or mill to earn some money. He also blamed himself for not paying proper attention to his study, rather to hand over him the work of watering plants, flowers, etc. And the French was also busy to play and in other works. Yam Hamel explained them the importance of the mother language as far as the French language. He described that French is the most beautiful, logical, and clearest language in the world, which can be learned easily. And the mother language is considered a key to the present when the people are enslaved in a country. So hence, they must learn the mother language, and as long as possible, they must guard it. So in this reference, Yam Hamel emphasized the importance of the French language, which is a mother language. And when he declared that it was the last lesson as the order from Berlin that only German language will be taught in the school of Alsace and Lorraine, Yam Hamel
declared that it was his last lesson. And as soon as he declared these words, the French had a thunderclap as he had started to learn French language somehow to read and write. And now the declaration that EMML will not teach in the school of Alsace, rather a German teacher will teach in the school of Alsace was a matter of shock for him. Everybody was in tears on that day to हम इंडिया की टॉप कंपनी से आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो हम आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगे। इंडिया की टॉप कंपनी आपके पोर्टफोलियो में विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। Dear students, now we are going to discuss about the important lesson, the lesson number 2, the last spin. In this important lesson, the narrator Nijum describes about 2 episodes during the journey. The first one was to Shimapuri, where she witnessed the rag pickers in the Shimapuri. And the second was to Firozabad, where she watched the condition of the bangle makers. Here in Simapuri, people were squatters who came from Bangladesh in 1971 in search of their living, as there were many storms that had blown away their houses and fields, and they had nothing there to get food and get something like money. Here in the street of Simapuri, they picked up rags. There were children and there were adults. For children, it is a wrapped in wonder and like a gold. But for the adults, rag picking is a mean of survival. As far as their condition, they are living in the miserable condition. They had not the houses. They lived in cloth, grass, and tent-made houses. So they had their names in voter list, and ration cards enable them to buy grain. It is very hard for them to get food for the day, for himself and for the family. Children were in rag clothes and barefoot. It was the miserable and pathetic condition there. Now we are going to enter the second phase of the chapter, where we will discuss about the condition of the bangle makers in Firozabad. There were the workers who worked in a hazardous condition, without any proper air, without any proper light, and there were in narrow cells. Among them, there were the adults and the children. And for children, it was a very dangerous because they had to work in suffocated atmosphere, in a dirty cell, and there is always mishappening with them. They work there at high temperature, and sometimes because of the polishing and of the dust